कम्युनिटी चिकित्सा विभाग, दयानंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, लुधियाना 4 और 5 नवंबर 2023 को चौथे IAPSM यंग लीडर्स नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का विषय सामुदायिक चिकित्सा चिकित्सक, उम्मीदें, वास्तविकता और प्रगति है और क्षमता पर केंद्रित है। विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों के लिए सामुदायिक चिकित्सा चिकित्सकों का निर्माण। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर AM कादरी, अध्यक्ष IAPSM, डॉक्टर पुरुषोत्तम गिरी, महासचिव IAPSM, सचिव DMC&H मैनेजिंग सोसाइटी श्री बिपिन गुप्ता, श्री मुकेश कुमार ट्रेजर DMC&H मैनेजिंग सोसाइटी, PMC सदस्य डॉक्टर अपजिंदर कौर, सिविल सर्जन डॉक्टर हितेंद्र कौर, डॉक्टर GS वांडा, वाइस प्रिंसिपल DMC&H डॉक्टर अश्वनी चौधरी और डॉक्टर विश्व मोहन, चिकित्सा अधीक्षक द्वारा दीप प्रज्वलन समारोह द्वारा किया गया। DMC&H मैनेजिंग सोसाइटी के सचिव श्री बिपिन गुप्ता ने इस राष्ट्रीय सम्मेलन के संचालन के लिए सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रयासों को बधाई दी और सराहना की। कम्युनिटी चिकित्सा के प्रोफेसर और प्रमुख और आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग चौधरी ने कहा कि सामुदायिक चिकित्सा के महान दिमागों को अपने शोध को फर्टिलिटी के बीच साझा करने के लिए एक साथ लाने के लिए ये सम्मेलन लगातार 4 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है और DMC&H को इस वर्ष इसकी मेजबानी करने पर गर्व है। कम्युनिटी चिकित्सा के प्रोफेसर और आयोजन सह अध्यक्ष डॉक्टर सरित शर्मा ने कहा, ये सम्मेलन विशेष रूप से युवा संकाय सदस्यों और सामुदायिक चिकित्सा के PG छात्रों को शामिल करने, सक्रिय रूप से भाग लेने और सार्वजनिक और सामुदायिक स्वास्थ्य में नेतृत्वकारी और समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने, नियंत्रित करने, उन्मूलन और उत्थान के लिए भूमिका निभाने के लिए आयोजित किया जाता है। डॉक्टर अरविंद माथुर, WHO प्रतिनिधि, तिमोर लेस्ते सम्मेलन के मुख्य वक्ता थे और उन्होंने राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के मामले में समग्र नीति और स्वास्थ्य वातावरण में बदलाव लाने के लिए युवा नेतृत्व के महत्व पर प्रकाश डाला। मेरठ के युवा प्रतिनिधियों में से एक डॉक्टर आशीष रावत ने कहा कि इस सम्मेलन से हमें सामुदायिक चिकित्सा के विभिन्न तरीकों के बारे में पता चला और हम किन विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। इस सम्मेलन में कई सलाहकार हैं जो हमारे किसी भी प्रश्न का जवाब देने के सक्षम हैं। इसलिए ये किसी भी युवा डॉक्टर के लिए एक बहुत ही उपयोगी अनुभव है। सम्मेलन का पहला दिन जीवंत उच्च नोट्स, पूर्ण सत्र, पैनल चर्चा और वैज्ञानिक पेपर प्रस्तुतियों के साथ गुजरा। माननीय श्री संजीव अरोड़ा, सांसद राज्यसभा सांसद से मिले सत्र का हिस्सा थे, जहां प्रचलित विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा की गई। सामुदायिक चिकित्सा में व्यावसायिक विकास पर सत्र में डॉक्टर संजय जोडपे, अध्यक्ष PHFI, डॉक्टर संदीप भल्ला, ECHO इंडिया और डॉक्टर अर्चिस्मान महापात्रा, GRID काउंसिल ने भाग लिया। सम्मेलन में पूरे भारत से फैकल्टी और PG छात्रों समेत 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विभिन्न बहसों और सत्रों ने इस सम्मेलन को और अधिक जीवंत और संवादात्मक बना दिया। डॉक्टर संगीता गिरधर और डॉक्टर महेश सतीजा, सम्मेलन के आयोजन सचिव डॉक्टर विक्रम कुमार गुप्ता, डॉक्टर प्रिया बंसल, डॉक्टर सुरिंदर पाल सिंह, डॉक्टर प्रांजल शर्मा और निशांत शर्मा सम्मेलन की आयोजन समिति का हिस्सा थे। लुधियाना से तहलका टीवी के लिए अमरीक सिंह प्रिंस की रिपोर्ट। From solar energy to preventive medicine, all kinds of stuff. And I think you also said that be mad. So that reminded me of Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. So that was actually a perfect line for youngsters like you. You must never, I mean, we continue to learn. We never cease to learn all our lives. My age, your age, any age, we continue to learn. Not only from people, from things, from surroundings, from our ecosystem around us, we are always learning. And I just picked up a few things from Dr. Mathur's speech, and he said research for the sake of research is absolutely useless. I agree with him. Just like I normally like to say, technology for the sake of technology is again meaningless. Unless we know how to use it, it's just technology. We like to say we got a wonderful computer, we got all kinds. Unless they are meaningful, they are pretty much useless. So I'm sure this is a beautiful occasion. It's a national conference, 3 days, 2 days of conference and 1 day's pre-conference yesterday. So I'm sure you would go back enlightened, very much enlightened, and you would do a whole lot of benefit to the community
because of course doctors play an absolute wonderful role, very vital role in society, but more importantly, we want, my father, when he was the secretary of DMC and Shri Premnand Gupta, he had started a, would be the leader of the public health and the community medicine in the future. And that's why this conference, conclave is design leaders conclave, I think. So it is, we have thought about it should, instead of having this so much talk by the senior people, dais is occupied by the senior people, we should provide the dais to the young member, we should provide an opportunity to the young member so they can unleash, they can show their potentiality as a leadership, and we can groom them as a good leader, because ultimately it is said that for the WHO said that they have recommended one framework of health system strengthening, which has got the 6 pillars, and out of them one is the leadership. So if we have to make the strong health system, we have to invest, create a good leaders for the health system. And that's why, in fact, this leadership, this healthcare, fourth National Young Leader Conclave we have come into the. Second thing I would be saying that IAPSM is committed to this for the young member, and I think that commitment can be, I can say, testimonial of the same thing is that 4 presidents are on the dais, 1 president is there, so 5 presidents are there in this function. 1 secretary general is there, and various other leaders are there. So it shows that commitment of IAPSM is mean that we should invest and we should work for the young members of the IAPSM. When we talk about the leadership, so definitely we wish that, because conventionally health system management we are talking about the anything perform, so it largely talk about the performance. But we don't want just performing. So you should start performing. We want as a leader you should start and think about transforming. So leadership is not about the performing, it is about the transforming. And that's why we think that if we want to transform the health system, we should have the good leaders. Leaders are not working on the people. Leaders are working for the people. And that's why we want to see that our people, IAPSM members, should start working with the people, because ultimately it is the working with the community, not the working on the people. So that is the one thing that we think about, that we should professionals and ladies and gentlemen. For me, an extraordinary privilege to be part of this discourse today, for the reason that this IAPSM Leadership Conclave was thought about when I was the president of the IAPSM. And I'm so happy to see that we have been able to organize the 4th conclave here today. I would like to congratulate the institutional leadership and also express our gratitude for organizing and hosting this conclave today here. Dr. Kanthri reflected on why we thought about this conclave as an integral part of our IAPSM initiatives. So I will not repeat that. But one of the important agenda that we always had at the back of our mind is, how do we position the young leadership of IAPSM to reposition the discipline of community medicine in 21st century? We really need to reflect and ponder on how do we reposition our discipline, which would able to advance the both national and global agenda for the public health in coming decades. And from that perspective, actually, we thought probably the young leaders of IAPSM will play a much more critical and important role in that aspect. And therefore, we would like to really reflect on 4 important issues, and I would like to mention about them. Education and training of community medicine will really need to be transformed. हम लोग कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं जो हमारे यंग पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ के में काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस करी है।
और स्पेशली यंग लोगों के लिए करी है उनकी, ताकि हम उनकी कुछ स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और वो जो भी चीज़ में जाना चाहते हैं उनमें उनको सपोर्ट कर सकें, तो इसलिए कॉन्फ्रेंस की गई है। तो यहाँ पर हमारे पास 250 के करीब डेलीगेट्स आए हैं ऑल ओवर कंट्री, और जो हमारे स्पीकर्स हैं वो कुछ इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आए हैं इनको ट्रेनिंग देने के लिए। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे